Hello Sunbeamers, how are you? I hope you all are fine. So welcome to the third class of chapter blood, the circulatory fluid of our body. So in the previous two classes, we have learned about the circulatory system, the function, the blood cells, plasma, okay, and blood vessels, and about the diagram of heart, the valves of heart, the blood vessels arising from the heart, everything we have completed. The chambers of heart, everything is done. Now we will read about double circulation. Double circulation. See, some students might be thinking that heart is an organ. So in heart, why it will cause double circulation? It is pumping, blood is going, and everything is happening. But see, if you take circulation into consideration, if I will draw a diagram of the heart, see, this is your tricuspid valve. This is your bicuspid valve. Fine. This one is your right auricle, left auricle, right ventricle, left ventricle. So here what happens? If you here pulmonary vein should be drawn in blue color. I'm sorry. Here is your pulmonary vein. Here is your vena cava. I already told you superior and inferior vena cava. Superior from the upper part, inferior from the lower part. Okay. Which blood comes here? Deoxygenated blood, or blood which has less oxygen. From here, aorta, and from here, pulmonary artery. What special feature about pulmonary artery? Pulmonary artery carries deoxygenated blood. And what special about pulmonary vein? It carries oxygenated blood. So, see, here blood comes from the lungs. Here blood goes to the lungs. And this happens simultaneously. एक साथ होता है, अलग अलग नहीं होता. अलग अलग होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा हार्ट. सी, सो व्हाट हैपेंस? Suppose, listen me carefully, okay? Blood to the lungs and blood to the body parts. देखो ये जो ventricles है, this is the ventricles. Right ventricle to lungs को जाता है ये. Right ventricle को blood purification के लिए कहां से जाएगा? Lungs को जाएगा. And left ventricle, it will go to the body parts. And this occurs simultaneously. एक साथ होता है. These two phenomenon occur simultaneously here. Okay? That's why we say it as double circulation. 2 times blood heart से pass होता है. एक lungs को जाता है, एक aorta को जाता है. Aorta से जाता है body parts को. So, 2 types of double circulation. क्यों बोलते हैं? एक होता है lung circulation, जिसको हम लोग pulmonary circulation बोलते हैं. We call it as pulmonary circulation. The circulation in which blood flows from the right ventricle into the vascular system of the lungs, get oxygenated and returns to the left auricle through the pulmonary veins. ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, समझ लेते हैं. See, here only we will understand. In pulmonary circulation, pulmonary means lungs. यहाँ पे गंदा ब्लड आया, गंदा ब्लड आके राइट वेंट्रिकल को गया,
राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स को गया, दे गो टू द लंग्स एंड फ्रॉम द लंग्स दिस गंदा ब्लड मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स को, लंग्स में क्या होता है, प्यूरिफाई होता है, तो प्यूरिफाई होकर क्या बन जाता है वो O2 ब्लड, O2 ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड blood, they becomes oxygenated blood and oxygenated blood comes to heart again. So this circulation is called pulmonary circulation. This circulation is called pulmonary. Pulmonary means lung circulation. And next is systemic. Systemic means system, body system कुछ हो जाएगा. Body system means what? So this one, first this from left ventricle से start होता है systemic circulation. Left ventricle blood will, which blood will go? O2 blood. O2 blood, oxygenated blood, अच्छा blood will go to body parts and body parts से वो फिर गंदा CO2 वो दे देंगे. CO2 will go through the vena cava. Vena cava से कहाँ आएगा वो? Right auricle. Okay, and this circulation is called as systemic circulation. Okay, it ends in the right auricle. रिटर्न्स हो जाता है, अच्छा ब्लड जाता है बॉडी पार्ट को, गंदा ब्लड रिटर्न हो जाता है. तो टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन. डबल मींस दो बार ब्लड पास होता है, ठीक है, दो बार ब्लड पास होता है. एक ऑरिकल से जो आपका मतलब लंग्स को जाता है, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, देन आफ्टर पल्मोनरी वेन अगेन टू लेफ्ट ऑरिकल, that is pulmonary circulation. Then after that systemic circulation, right left ventricle, it will go to body parts through aorta, and from aorta the blood the body parts give out waste products. Okay, and to vena cava it will come to right auricle. This is your systemic circulation. Fine. The heart contracts to push out the blood to various parts of the body and then relaxes to receive back the blood from different parts. हार्ट जो है वो पंपिंग करता है. पंपिंग मीन क्या? कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. सो व्हाई इट कॉन्ट्रैक्ट करता है? ब्लड को पुश करने के लिए. पुश ब्लड मीन्स इट विल पुश ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट विल रिलैक्स टू रिसीव ब्लड. पुश अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कैसे रिसीव करेगा? कॉन्ट्रैक्ट में साइज छोटा हो जाता है तो कैसे रिसीव करेगा? इसलिए वो रिलैक्स करता है, रिलैक्स करके अच्छे से ब्लड को रिसीव करता है. ओके, then this rhythmic contraction and relaxation of heart is called as cardiac cycle. rhythmic हिसाब से होता है वो. रिदम अभी पढ़ना नहीं है आपको, लेकिन वो रिदमिक हिसाब से ही होता है, रिदमिक थ्रू से होता है. it is a rhythm of contraction and relaxation through which the body parts receives blood and gives blood to the heart. Okay, so this one I have already told you in the previous class how this circulation happens. Okay, lungs say left auricle, left ventricle, everything I have told you. Double circulation I have told you in the previous class. If I repeat here in gist, let us start from the lungs. lungs में blood है, blood lungs में है, ठीक है, blood is in the lungs. So from the lungs it will come to the left auricle by pulmonary vein. Pulmonary vein lungs to left auricle carrying O2 blood. Which blood? O2 blood. Left auricle, this is bicuspid valve. Here is a valve, bicuspid valve, and from this valve it will go to the left ventricle, and from the left ventricle this will move through aorta. This artery is called as aorta. Okay, and from this aorta it will go to the body parts, and this one you see, this is your tissues or body parts. This is capillary beds. I have told you the terminal branches of arteries are the capillaries and the initial branches of veins are also the capillaries. So here capillaries are there. In capillaries what happens? In capillaries exchange of gases takes place. Exchange of gases. Okay, exchange होता है कहाँ पे? कैपिलरीज.
Then vein starts, vena cava. From the vena cava, this is the inferior vena cava. This is the superior vena cava, forms the common vena cava, goes to the right auricle. It goes to the right auricle. Vena cava में कौन सा blood होता है? CO2 blood. Which blood is found in vena cava? The CO2 blood. This CO2 blood goes to the right ventricle through tricuspid valve. Tricuspid valve से कहाँ जाता है? Right ventricle. And from the right ventricle, for purification, the blood goes to the lungs. The blood goes to the lungs, and in lungs it purifies and comes again. And this is known as double circulation. Fine. Okay. So contraction of the heart is called systole, and relaxation of the heart is called diastole. Okay. Systole and diastole. Now valves. Valves का function क्या हो गया? Valves का function समझते हैं. Very easy. Suppose this is your bicuspid valve. ठीक है? This is your auricle. कौन सा auricle? Left auricle, left ventricle. Suppose example. Here valve. This is your left auricle, left ventricle. Okay. Bicuspid valve. Blood is coming here. Fine. When ventricle will contract, left ventricle will contract. If there is no valve, blood will flow back to the left auricle or not. अगर valve यहाँ नहीं होता, यहाँ पे आउटा है suppose, अगर ये पंप करेगा तो आउटा को ब्लड जाएगा ना. ब्लड रिसीव करने के लिए क्या करता है? ब्लड देने के लिए हार्ट क्या करता है? पंप करता है. तो when heart will contract, when left ventricle contracts, blood can flow back to the left auricle, but it doesn't happens. Why? Because this valve closes. क्लोज हो जाता है valve. valve क्लोज होने से क्या हो जाता है? ये वापस ये सिर्फ आउटा को ब्लड जाता है, लेफ्ट ऑरिकल को ब्लड नहीं जाता है. The function of valve is allowing blood to flow in one direction. And what is the direction? From auricles to ventricles. Auricles to ventricles. Ventricle to auricle नहीं होता है valve का direction. Only from auricles to ventricles. Hepatic portal circulation. Very, very important. पहले portal क्यों है? Portal. What is portal? पोर्टल हम लोग वेन को बोलते हैं. पोर्टल मतलब वेन विच स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ कैपिलरीज. सपोज हम लोग वेन क्या समझे? इनिशियल ब्रांचेस. लेकिन जो पोर्टल होता है वो वेन स्टार्ट भी होगा कैपिलरीज से एंड एंड भी होगा किससे? कैपिलरीज से. एंड दिस वेन्स इज नोन एज पोर्टल वेन. एंड हमारे बॉडी में एक पोर्टल सिस्टम है, दैट इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. Okay, let's see what happens in hepatic portal system. It is a circulation of food-laden blood from small intestine to the liver and then to liver to heart. तो hepatic portal, hepatic मतलब liver. So यहाँ पे देखो intestine से जो liver को जाता है और liver से फिर heart को जाता है. This is called your portal circulation. Okay, this is your portal circulation. Liver monitors the substance before passing into the body. Excess glucose is retained in form of glycogen. Excess amino acid are broken down by the liver. Harmful chemicals are detoxified. Bacteria are destroyed and excess minerals are stored. So liver को जानना क्यों जरूरी है? Blood, because हमारे blood में glucose होता है. We have glucose in our blood. Okay, we have some amino acids in our blood. We have some bacteria also, harmful bacteria, some minerals are also there. So उस ग्लूकोज को वो स्टोर करेगा. एक्सेस ग्लूकोज नहीं चाहिए बॉडी को. लिवर विल स्टोर इट एज ग्लाइकोजन एंड व्हेन इट विल बी रिक्वायर्ड वो ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा. ओके, अमीनो एसिड ज्यादा नहीं चाहिए उसको डीएमिनेट कर देगा, अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन कर देगा वो. ओके, हार्मफुल केमिकल्स जो होता है उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा. डिटॉक्सिफाई मतलब उसका टॉक्सिन को हटा देगा वो. ओके, that's why liver is a very, very important organ of our body. Now, blood circulation. What is this blood circulation? See.
I've already told you this one, just I'm giving a reading. The blood returning from the body to the heart is receiving in the right auricle. It contains carbon dioxide. I've already told you, वेना कावा से जो blood आता है right auricle को, उसमें वो क्या होता है? Carbon dioxide blood होता है. Oxygen rich blood returning from the lungs is received in the left auricle. Left auricle में कौन सा blood होता है? O2 rich blood होता है. Which blood? O2 rich blood. When the auricles contract, they force the blood into the two ventricles. Two auricle, यहाँ पे हार्ट का डायग्राम है. These two auricles will contract. Then what will happen? When these two auricles will contract, they will force the blood, one direction flow, force the blood into ventricles. दो ventricle को वो blood flows करेंगे. एक ही direction में होता है तो एक ही direction में force करेंगे. Now the ventricles contract and they force the blood into two large arteries. When the ventricles will contract, see these two ventricles when they contract, where's the diagram? Yeah, these two ventricles when they will contract, they will force the blood to two arteries. What are the two arteries? The pulmonary, your artery and the aorta. Pulmonary artery, aorta को क्या करेंगे? Force करेंगे. They will contract. They will force the blood. Which blood? RB will force O2 blood, LV will force O2 blood. Where? To RB to pulmonary artery and LV to aorta. Okay, fine. Pulse. Now pulse. What is pulse? See, if you touch your wrist, and little bit press your finger in the wrist, you can observe a throbbing sound. Tuck, tuck. These throbbing sounds are the arterial sounds. When blood flows from the arteries, they give a throbbing sound. Why? Arteries have a thick muscular wall. So blood flow in the arteries by giving jerks. Blood flow in arteries with jerks. That jerks can be observed or can be felt by if you place your finger near a wrist, you can easily feel that, okay, pulse or the jerk, and that jerk is known as your pulse. Okay, you can count it, and that pulse is equal to your heartbeat. What is heartbeat? Number of beats the heart perform in 1 minute. Okay. How many total number of heartbeats in a minute? 72. It varies, but on an average, it is 72. Okay. So you can see, if you go to a doctor will take a stethoscope, and by stethoscope, he will check your heartbeat. And if your heart pumps faster, you must have a hypertension. Hypertension means high blood pressure. ज्यादा pressure होता है तो हम लोग उसको hypertension बोलते हैं. And fever also heartbeat increases. Low pulse, what is the why low pulse? Because of poor functioning of the heart. Okay. So by stethoscope, they can easily hear the sounds of your heart, and they can tell what is the problem in your body. The doctors. Now the last part of the chapter is blood group. Very, very, very important. Very, very, very easy. Okay. So who was the scientist? Carl Landsteiner. Carl Landsteiner was the scientist in 1900, and he identified different types of blood groups in humans. Okay. What was the basis of blood group differentiation? Why blood group differentiation? Differentiated because of presence of antigens. Antigens are the proteins on the RBC surface. See, if this is your RBC, on the surface of it, you will have antigen. Okay. Basis of it, you will have antigen. Okay. So on the basis of antigen only, he differentiated blood into different blood groups. So if the person is having A antigen, the blood group is A. If the person is having A antigen, he will be A blood group.
उसका ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। पर्सन विथ बी एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप। पर्सन विथ बोथ एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप। ओके, एंड अगर कोई भी एंटीजन नहीं होगा उसको एक और अलग नाम दे दिया, ओ ब्लड ग्रुप। नो एंटीजन, ओ ब्लड ग्रुप, ओ। सो वी हैव फ्लोड ब्लड ग्रुप्स ए बी एंड ओ। सो मैचिंग कैसे होता है? सपोज इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन व्हाट हैपेंस? इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, okay, you have to do proper matching. Proper matching means antigen of both the persons should match properly. Suppose if you are having donor blood group का अगर A है तो वो किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है? जिसके पास A एंटीजन होगा। A के पास A एंटीजन है, वो दे सकता है। B के पास तो A एंटीजन नहीं है तो वो नहीं दे सकता। दे कैन नॉट गिव। ए बी जो है उसके पास दोनों एंटीजन है तो वो दे सकता है। ए बी को दे सकता है। ओ के पास तो एंटीजन ही नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं दे सकता। बी बी सी इफ यू टेक ए हैज ओनली एंटीजन ए but B has antigen B, so A cannot receive blood from B. B can receive blood from B because same antigen. AB can receive blood from B because B antigen is there. O cannot. Okay, O cannot receive blood from B because O has no antigen. AB see AB has both A and B. So अगर A को दे दिया तो दिक्कत है क्योंकि इसके पास B भी है तो इसके बॉडी में जाकर रिएक्शन करेगा वो। सो A को नहीं दे सकता है B को भी नहीं दे सकता है ए बी को ही दे सकता है, O को भी नहीं दे सकता। O जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, डोनर। व्हाई डोनर? बिकॉज O के पास कुछ एंटीजन ही नहीं है। They have no antigen, so they can give blood to any of the blood groups. That's what is called as your universal donor, and this is called your universal recipient. अब ये एंटीजन एंटीबॉडी का खेल क्या है? What is this antigen antibody खेल? Let's see. Very easy. Suppose we are doing a blood transfusion. In that, blood group A is giving blood to blood group O. बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीजन ए है एंड ओ के पास एंटीजन ही नहीं है। अगर ए गलती से ओ को ब्लड दे देता है, इफ ए गिव्स ब्लड टू ओ, देन व्हाट विल हैपन? दिस O will form antibodies against the antigen. Antibodies in the first class I have told they are the blood proteins which provide immunity or will protect us from disease. Okay? Antibodies वो produce करेगा. Why they will produce antibodies? Because in the blood of O के body के लिए this A antigen is new. For the blood of O, this antigen A is new one. So what will it do? The antibodies will be formed, new antibodies form होगा क्योंकि एंटीजन जो है वो न्यू सब्सटेंस है बॉडी के लिए। सो वो न्यू एंटीजन फॉर्म होगा, न्यू एंटीजन एंटीबॉडी फॉर्म होगा, दे विल फॉर्म न्यू एंटीबॉडी एंड दिस न्यू एंटीबॉडी विल डिस्ट्रॉय दिस एंटीजन आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा एंड देन द पर्सन विल डाई। ओ खुद के एंटीबॉडी की वजह से ही ओ मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? अरे वो एंटीजन ए को अलाउ ही नहीं कर रहा है, दे विल नॉट अलाउ एंटीजन ए, सो द पर्सन विल डाई। That's why blood matching is very important while blood transfusion. Okay. These antibodies are also are the special proteins. In first class I have told you. See here what is given. Sticking हो जाता है, sticking. Antibodies क्या करेगा? Stick कर देगा. Otherwise that person will stick to each other and endures the life of the specimen. Antibodies antigen के ऊपर stick करेगा उसको रोकने के लिए and then the person will endanger it and the person can die also. अब O क्यों सबको ब्लड दे सकता है? O के पास तो एंटीजन ही नहीं है और एंटीजन ही नहीं तो एंटीबॉडी ही नहीं बनेगा, आराम से ब्लड फ्लो कर सकता है।
ठीक है, अंडरस्टूड? दैट्स व्हाई दिस इज द योर थ्योरम और मैकेनिज्म ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आरएच फैक्टर, आप लोग सुने होंगे आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर, the rhesus factor which is found from the rhesus monkey. rhesus monkey से हम एक RH फैक्टर फाउंड करते हैं जिससे इस ए ब्लड ग्रुप का भी 2 पार्ट्स हो जाता है, एवरी ब्लड ग्रुप का 2 पार्ट्स हो जाता है। Why? Because of rhesus factor, and this is also important. rhesus factor क्या करता है, जिस जिस ब्लड ग्रुप में rhesus फैक्टर होता है वो प्लस पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, नहीं होता है नेगेटिव। बी में होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव नहीं होता है नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। रेसस फैक्टर अगर एक ब्लड ग्रुप आरबीसी पर है दैट इज रेसस पॉजिटिव और आरएच पॉजिटिव, अगर नहीं है एब्सेंट है आरएच नेगेटिव। ये भी ट्रांसफ्यूजन में आपको ध्यान में रखना है। क्यों रखना है देख लो, ट्रांसफ्यूजन में इसको ध्यान में क्यों रखना है। सपोज एक प्लस ए प्लस वाला ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव को ब्लड दिया, ठीक है, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप गेव ब्लड टू ए नेगेटिव, 1 time 2 time it is okay, but if continuously they are giving then what it will do, इसके आरबीसी पर तो आरएच फैक्टर है ही नहीं, they do not have any RH फैक्टर। तो अगर पॉजिटिव वाला फैक्टर आ गया तो वही सेम एंटीबॉडी फॉर्मेशन, वही सेम एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी फॉर्म करेगा इसके अगेंस्ट। ये तो नया है ना इसके लिए, इसके लिए नया है क्योंकि इसमें तो था ही नहीं RH फैक्टर, दे डू नॉट हैव RH फैक्टर। बट इफ यू आर गिविंग RH फैक्टर, समथिंग न्यू इज कमिंग, again antibody will be made by the body, and antibody will be made, these antibodies will stick to this RBC and destroy it, and the life of the person will be endangered. Okay, एक बार ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, 2-3 सेकंड थर्ड टाइम अवॉइड किया जाता है इस कारण की वजह से। अगर मैं यहाँ पे पूछा आपको ए नेगेटिव वाला, ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव को दे सकता है कि नहीं, कितना बार दे सकता है, और दे सकता है कि नहीं और कितने बार दे सकता है, आंसर इज he can give blood as many times as he wants, no restriction. Why? ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर है आरएच फैक्टर, इसको ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप दिए जिसमें आरएच फैक्टर है ही नहीं, तो इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, दिक्कत नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज आरएच फैक्टर है ही नहीं, एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगा ही नहीं, आराम से ब्लड आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। बट ए नेगेटिव वाले को दिक्कत है अगर ए पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप दे दिए तो ज्यादा। ओके, सो यहाँ पे लिखा है सेकेंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ आरएच नेगेटिव blood groups after interval antibodies will react and it will cause problems. This is all about your blood group. Okay, one page is left, we will complete it. Okay, and next class we will discuss this question answers if possible, otherwise you can do it by your own also because everything I have taught you. Okay, blood pressure क्या होता है, we called it as BP, ठीक है, blood pressure, the pressure exerted by the blood on the walls of arteries. Why? Because of thick muscular walls. Arteries का walls में thick muscular walls होता है, arteries have thick muscular walls, so when blood will flow through it, it will flow in with pressure, with a jerk, and that is your blood pressure. And उसका 2 limit होता है, the upper limit is the systolic pressure. Systolic pressure कब होता है, जब ventricles contract होते हैं, when ventricles contract, contraction को हम लोग क्या बोलते हैं, systole. I've already told you, contraction is called as systole and relaxation is called as diastole. रिलैक्सेशन को हम लोग डायस्टोल बोलते हैं। सिस्टोल में जो प्रेशर हुआ सिस्टोलिक प्रेशर,
डायस्टोल मीन्स मिनिमम प्रेशर, डायस्टोल में रिलैक्सेशन होगा, डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर में कौन सा प्रेशर होगा? जब आपका वेंट्रिकल्स के रेस्पेक्ट में ही हमारा सिस्टोल डायस्टोल होता है। सपोज आपका ये हार्ट है, दिस योर हार्ट, ओके, acute heart, and blood is flowing by the to the pulmonary artery and the aorta. So pulmonary artery और aorta को blood जा रहा है, मतलब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब कौन सा प्रेशर है? सिस्टोलिक प्रेशर। क्योंकि वेंट्रिकल्स के रेस्पेक्ट से ही हम लोग बोलते हैं ये सिस्टोलिक है डायस्टोलिक है। तो ये कौन सा प्रेशर है? सिस्टोलिक प्रेशर है। अपर लिमिट कितना होता है इसका? 120 होता है, इसको याद रखना है। 120 एवरेज, मतलब जो नॉर्मल है 120। अब डायस्टोलिक समझते हैं। ब्लड आ रहा है कहाँ से? वेना कावा से। ब्लड आ रहा है कहाँ से? वेना कावा से आ रहा है और यहाँ से आ रहा है। यहाँ से आ रहा है मतलब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑरिकल्स को आ रहा है। वेंट्रिकल्स क्या रिलैक्स में है। ब्लड कहाँ आ रहा है? ऑरिकल्स को आ रहा है, वेंट्रिकल्स को जा रहा है। ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं? कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? अगर ब्लड ऑरिकल्स से वेंट्रिकल्स को फ्लो होता है तो ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ऑरिकल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, ये तो बैकफ्लो हो जाएगा ना। और क्योंकि ये ओपन है ऑरिकल्स, क्योंकि वाल्व जो है एक डायरेक्शन में अलाउ करता है। ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड का बैकफ्लो नहीं होता है और ब्लड जो है वेंट्रिकल्स जो रिलैक्स होता है। वेंट्रिकल्स रिलैक्स ना मतलब डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, क्लीन। इंस्ट्रूमेंट जो होता है मेजर करने के लिए, दैट इज स्पिग्मोमैनोमीटर। इसको याद रखना है भाई, स्पिग्नोमैनोमीटर, जो कि ब्लड प्रेशर मेजर करने में हेल्प करता है। नॉर्मल 120/80 होता है। राइज हो गया हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर 140/90, और अगर लो हो गया तो हाइपोटेंशन। ओके ओके, एंड फ्रॉम दिस your chapter is over. Let's do the MCQ questions. Okay, MCQ question. Function of WBC is to, function of WBC ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आरबीसी करता है ना, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये तो नहीं होगा। हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, बिल्कुल नहीं होगा। प्लेटलेट करता है। प्रोवाइड इम्यूनिटी, इज द आंसर। ब्लड कैपिलरी इज ए ब्रॉड ट्यूब, बिल्कुल भी नहीं। ब्लड कैपिलरी क्या होता है? सिंगल एंडोथेलियम होता है। सो नैरो ट्यूब मेड अप ऑफ एंडोथेलियम ओनली, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आर्टरी तो होता ही नहीं है, वो आर्टरी का टर्मिनल ब्रांचेस होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, फर्स्ट ऑप्शन आरबीसी। आरबीसी जो होते हैं वो इन्यूक्लिएटेड होते हैं। कौन से स्टेज में? मैच्यूरेशन। अब इमैच्योर्ड आरबीसी देखा तो हम लोग आंसर गलत हो जाए। ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एपेटिक आर्टरी नहीं। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से लंग्स। ठीक है। स्पिग्मोमैनोमीटर मेजर्स ब्लड प्रेशर, अभी अभी पढ़े थे। pulmonary vein carries, see, only vein to carry oxygenated blood. Okay, blood tastes saltish due to dissolved sodium chloride. Okay, MCQ डन, ये सब आप खुद से कर सकते हो। ठीक है। कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन, HB। Two lower chambers of heart are called ventricles. Blood plasma contains reserve substances called, क्या होगा? reserve substances fibrinogen. The liquid part of coagulated blood is called serum. Liquid part of coagulated blood is called serum. Dash artery takes blood from ventricles to lungs. Which artery? Pulmonary artery. Pulmonary. Instrument to find blood pressure, sphygmomanometer. Okay, these things you can do. Any doubt you can access in the doubt engine. The first chapter is over. Next class we will start the second chapter. Till then, thank you, bye bye, and take care.